Uh, Welcome, friends. It gives us pleasure that even though it is a weekend, and yet we have joined again. And deliberately, we have chosen the team has chosen a topic which is quite distinct and distinguishable from the normal topics which we are keeping from day to day. Living in the life has its own challenges. And once life has its own challenges, and when the circumstances like of COVID-19, that itself it becomes more challenging. Good evening, everyone. As we were discussing before Mr. Luthra joined us on the platform, life has its own challenges, and the fact that today, for good 5-10 minutes, we have experienced our own challenge. And the way how we navigate under such challenges is an art to be learnt with time and skill. And Mr. Luthra, who is a ex-DGP from Chandigarh, he's an IPS officer, he's a motivational speaker. His articles are published on various platforms, various journals. On the Medium, you can regularly find him. In the newspapers, you can regularly find him. His style of speaking itself is a treat for the ears. He's known for his Sher or Shairi, though he will be speaking in the English. But we would definitely, during the course of the session or thereafter, we would like to hear some couplets which he has written on his own. Since we have already consumed a lot of time to come over these issues, over to Mr. Luthra. And Mr. Luthra is a President Gold Medalist. Mr. Luthra, I'm quite sure that the participants would feel happy by the end of the day that though on a weekend, we just posted a topic on the life skills and they have just latched it. Thank you. Over to you, sir. Thank you so much, my dear friend Vikas. I'm really, really grateful to you that you are giving me this great platform to speak to so many lawyer brothers. My dear friends, you would be attending these webinars on different domain skills, like what is drafting, what is arguing, what is advocacy, and of course on other various laws also. But today I want to discuss something really different. I divide skills into two parts. First part is domain skills. For example, you all are lawyers. I'm also a law graduate. So for a lawyer or a law graduate, what are the domain skills? The domain skills are you should be good at drafting, you should be good at legal research, you should be good at arguing, advocacy, business development, client development, etc., etc., etc. But what about life skills? Do we ever think that we have to gain some life skills also? Because in the race of competition, in the race to achieve greater and greater success, we only develop domain skills and we do not care about life skills. So today I would like to talk about life skills. And the reason is very simple. Very recently, a survey was conducted among lawyers of Australia and New Zealand, and the results of the survey were very shocking. The key points of the survey I would like to share with you. 85% of the lawyers who were surveyed, they experience anxiety in the workplace. And 60% of the lawyers said either they themselves were experiencing depression or they knew some other lawyer who was depressed. I'm sure you will also be surprised, if not shocked, at the results of these surveys. So, what should we do? Because the law profession is highly competitive. We work under high pressure environment and we have to meet hard deadlines. So therefore, this anxiety or depression, etc., stress, burnout is we are bound to face such issues. So what should we do? That is the big question.
My point is to deal with such issues of anxiety, depression, stress, burnout. We should be emotionally resilient. When I use the word resilient, you would be surprised or you would like to know what is the real meaning of resilience. My dear friends, like a boxer, when he practices with a punch bag, he he pushes the punch bag, but the punch bag after some time comes back. The capacity of the punch bag to come back to the same position is its resilience. In simple words, all of us face adversity and we go down in life. But if we can come back to the same position or maybe to a higher position where we were, that's called a resilience. But everybody is not resilient. Some of us are resilient when we face adversity, we go down in life, we come back, we bounce back. Some of us do it immediately. Others take time. They go down in life when they face adversity, but they take time, lot of time to come back. And unfortunately, there are some of us, when they face adversity, they do not come back because they are not resilient. They go down in life. They become victims of anxiety or depression, stress, and burnout. They are not able to come back. So, what should we do? How do we become emotionally resilient? It is very easy to say that we all should be resilient, but how should we become emotionally resilient? So, to become emotionally resilient, there are certain life skills which we must learn. And if we learn those life skills, we can be emotionally resilient and we can face adversity. Not just we can face adversity, we can quickly come back from adversity. We can bounce back immediately from adversity, and we can not just come back to the same position, rather, we can go higher from the position where we were. So, I would like to share some of the skills that we should learn to become emotionally resilient in life. The first skill is optimism. If you are an optimistic person, or you can cultivate optimism as a skill, you can face adversity. You will not go down in life. The second skill is empathy and compassion. If you are an empathic person, or if you are a compassionate person, you can face adversity and you can come back, you can bounce back from adversity. Similarly, if you are a person who has invested a lot in your relationship, you can share your adversity immediately. Similarly, uh, there are other ways which keep us emotionally resilient, like walking, jogging, yoga, aerobics, gymming, because there are scientific studies that when you are into physical activities like walking, jogging, yoga, etc., your brain releases endorphins, and those endorphins calm you down. When I was at University of Pennsylvania, I was doing my masters. So a great professor from Harvard, his name is John Ratey, he came and he taught us the advantages of movement. Movement means walking, jogging, yoga, aerobics, gymming. So he has done a detailed study on what are the benefits of these exercises. Similarly, there is another skill by which we can become emotionally resilient, and it is the habit of maintaining a checklist. I'm sure, as an advocate, all of you would be maintaining a great checklist or to-do list, every day's to-do list. कि आज इस कोर्ट में ये
केस आना है आज इस कोर्ट में, ये केस आना है. That's great. But what about the other chores of life? Do we maintain a checklist about the things which we need to do about our family or about our friends or about our other things? So checklist declutters your mind. When you create a checklist in the morning or you create a master checklist for a month, you declutter your mind. You immediately feel that some stress that was there on your mind has been put aside. But when you don't make a checklist, you always feel, अरे वो बात रह ना जाए, वो काम रह ना जाए, उसके यहाँ जाना था, उसकी बेटी की शादी थी, वो रह ना जाए. So checklist is again the habit of creating a checklist is again a great skill to become emotionally resilient. But friends, the biggest skill which now I'm going to talk about, which can make us emotionally resilient, is something different, and it is mindfulness and meditation. When I was studying at University of Pennsylvania, I was surprised. All most of the white American professors, when I would be engaging with them, and they would share their personal stories, they would tell me, I do meditation. And I was very surprised why this white American who's an Orthodox Christian or who's a Jew, why does he meditate? Because meditation is a religious practice which we follow in India and other neighboring countries. It's a Hindu practice, it is a Buddhist practice, maybe it is a Jain practice also. At some level in Sikh religion also it is followed. So I was highly surprised why a highly educated white American is following meditation. So then I went deeper into it. Why these people who are in all spheres of life, socially, economically, academically, are higher than us, why they are following a religious tradition of India or of Asia. So I was, So you are audible. yeah, You are audible. am I audible? Yeah, yeah. Yeah. So I was really surprised. So then I asked them, what are the benefits of meditation and why do you do it? And it is Indian religious practice, and you are a Christian, you are a Jew, why do you do it? He says, my professor says, we know the benefits of meditation, that's why we do it, and to remove the religious conflict, I will again say this sentence, to remove the religious conflict, we have given it a different name, and the name which they have given to meditation is mindfulness in secular context. Pardon? Sir. Probably the video from the side of Mr. Luthra is struck. He would be trying. So as Mr. Luthra was saying that the challenges of life come for everyone. Whatever we are trying to attempt, it doesn't go the way it's smooth. But as they say, the sailors help us to sail through in case of adversities. And for that, you have to prepare yourself. The challenges for the profession within this cell are quite challenging. I will just ask Mr. Luthra, just bear with us, that he should try again.
Sapna? Yeah, it's working on my end. It's showing data is being consumed. Hello. Sure. Hello. Yeah. Yes. Thank you so much. No, I was sharing with them that these are the challenges which one has to learn with the flux of time. One may be prepared for something else, but it goes in the other way. Life doesn't go the way it plans. Yeah. Yes, sir. So, over to you. They are very smart and wise people. When they like something, when they understand that meditation is beneficial to them, so to remove the religious context, what they did, they gave a different name to meditation, and the name which they gave is first name is mindfulness in secular context. When they say mindfulness in secular context, so they have removed the context of religion. And the second name which they have given to meditation is, they call it Eastern contemplative practices. I repeat, Eastern contemplative practices. The thing is the same, whether you call it Eastern contemplative practices, you call it mindfulness in secular context, or simply call it meditation. The thing is the same. So then again, I was surprised. I asked them, but why do you do meditation? It's okay that you have given it a different name and you have removed the religious conflict, so that your priest, your father, etc., they would not object that you are following the tradition of a different religion. But still, why do you follow meditation? What are the benefits of it? Then they told me that in the Western world, we have validated meditation on the scientific altar. We have tested meditation scientifically. And how did they do it? I will share a story with you. There is a great science journalist. His name is Daniel Goleman. Right now, he would be 75, 80 years old. About 50 years back, in the early 70s, he was doing his master's at University of Harvard. And he was doing his master's in clinical psychology. Clinical psychology primarily deals with to know what are the problems in a human being, what are the deficiencies in your personality or in your psychology, in your psychological thinking. So he was doing his master's in clinical psychology. He got a pre-doctoral fellowship, travel fellowship to India. He came to India, and here he met some yogis. He went to some temples, mutts, and he got introduced to the system of meditation. He was highly impressed. So when he went back after his fellowship to the Harvard University, he told his professor that in India, I got introduced to a different system of psychology. And this system of psychology deals with the upside of human potential. Remember, this student was a student of clinical psychology, which deals with finding the deficiencies in your personality. But he got introduced to a different system of psychology in India through meditation, which looks up to the upside of human potential. कि आपकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीजें हैं जिसको हम और ऊपर ले जा सकते हैं. For example, if your optimism is, let's say, on a scale of 1 to 10, your optimism is at 5, we can take it to 8 or 9 through this system of psychology. Hello. Hello. I hope I'm audible. Yes, sir. I hope I'm Yes, sir. Yeah. Yes. So he told his professor that I want to do my dissertation
on Indian system of psychology, which is meditation. His professor laughed it away. He said कि अपना career खत्म करना है क्या? Because if you do this, this will be your career ending move. Your career will end here as a clinical psychologist, and you are at Harvard University. So please think about it. This man did not budge. He said, no, I know I have been introduced to this new system of psychology, and I would do my dissertation on meditation. And then he was joined by another student there whose name was David Richards. Richard David. So we call him Richie. So then Richie and Daniel Goleman, they did their dissertation on meditation. It was in the early 1970s. And when they did their dissertation on meditation, they went through a lot of articles, scientific articles on meditation. That was the time when there were just few articles available on meditation in the science journals. I'm talking about the scientific articles. And then they started their journey, and finally, slowly, they started researching all the literature that was available on meditation. Then what they did was they came to India and they persuaded some of the yogis that please come to the US. We would like to test your brain. What is so special in your brain that which is not in other normal person's brain, and we want to test it. We want to scan your brain. Yogis were not interested. They said, we don't want to prove anything. We don't want to prove that our brain is superior to others, because we are not doing meditation to gain some edge over others. We do it because we like it. We like this way of life. So we are not interested to go with you and scan our brains and prove something that our brain is better than others. But Daniel Goleman persuaded them that please come with us to the US. We have the best brain scanning machines, and we want to scan your brains not because that we would be proving that your brain is superior to others, but we would be telling the mankind that if you do meditation, if you do mindfulness, these are the benefits. This way your brain will change, and these changes will be there permanently. And if you come with us, if we get the scientific results of your brain and we publish it, the whole mankind will be benefited. So that's why we want to take you. This point really appealed to the yogis. And finally, they took 21 yogis. They flew them to Wisconsin because Richie had set up, he was a neuroscientist. By that time, he had become a neuroscientist. So he had set up his laboratory in the University of Wisconsin. So they flew 21 yogis. And there they scanned their brains under different conditions. And then they matched those brain scans with the brain scans of normal people like you and me. And then they found some significant differences. And then they analyzed those significant differences and wrote about it in the scientific journals. So I would like to share some of those changes which they found when they scanned the brains of the yogis. The first change which they found was amygdala. Can you show the slide? I'll show you a slide. I'll show you a slide. Amygdala is the middle part of our brain. It is called amygdala. So amygdala is the middle part of our brain, which is basically a control room, which acts as a radar. When we face any danger, amygdala works. Amygdala alerts us. So what do we do when we face some danger? We either flee
कोई खतरा खड़ा होता है तो या तो हम भाग जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं, और डरते नहीं है तो वी फाइट. सो देयर आर 3 responses which amygdala creates: flee, freeze और fight. ये तीनों तरह के रिस्पॉन्सेज एमिगडला क्रिएट करती है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेडिटेट? योर amygdala neurocircuit gets more connected. It thickens. That was the difference that they found. The yogi's amygdala was more connected. It was thicker than an ordinary person's. So what happens when your amygdala is thickened or it is more connected? Its neurocircuitry is more connected. What happens? The thing which happens is your amygdala does not allow you to flee or freeze. It gives you the right response. And whatever be the right response in that situation, that brings maturity. So when a yogi faces a danger, or when an ordinary person faces a danger, the response is completely different. This happens. आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक बच्चा जब खतरे को महसूस करता है और वही खतरा उसका फादर महसूस करता है, दोनों के रिस्पॉन्स में बड़ा फर्क होता है. बच्चा जल्दी डर जाता है, हम लोग नहीं डरते हैं. क्यों? बिकॉज our amygdala as compared to a child is mature. Our response therefore is more mature than a child's response. Similarly, a yogi's brain amygdala is more mature than ours. Therefore, his response to any danger would be different from ours. So this was a major difference which they found. Then there is another part of our brain which is called prefrontal cortex. Prefrontal cortex जो है, ये हमारा जो आईब्रोज के बीच का एरिया है, इसके पीछे जो हमारा ब्रेन है, इसको कहते हैं prefrontal cortex. It is also called the executive brain because it is this part of the brain which thinks, which plans, which decides, which executes. That's why it is called prefrontal cortex. आपने कभी भी अगर जुवेनाइल जस्टिस की हम कभी बात करते हैं कि why at one point of time the juvenile justice age limit was 16 and then it was raised to 18. Why it was done? What was the need to enhance the age limit from 16 to 18? There was a time when if you are 16 plus, you will not be considered a juvenile. You will be dealt with the regular law and the regular court. But then it was enhanced to 18 plus. So why it was done? Because the scientific studies said that the prefrontal cortex of a 16-year-old is not mature enough to decide, to think, to plan, and execute. Therefore, up to 18, you should be considered a juvenile. So when they scanned the brains of the yogis, they found significant differences between the prefrontal cortex of a yogi and an ordinary person. So अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसकी जो न्यूरो सर्किटरी है, इट गेट्स थिकन्ड, इट गेट्स मोर कनेक्टेड, एंड वी आर बेटर एबल टू थिंक, टू प्लान, टू डिसाइड and to execute. Similarly, they also researched on multitasking. Actually, multitasking is a myth. It is a fiction. There is nothing called multitasking. Multitasking is like right now I'm on the webinar, but at the same time I'm also tempted to check my email or to check my WhatsApp
or to tell my servant कि यार एक चाय ले आना. Okay. When we switch between two tasks, we lose concentration. And when we come back to the same tasks, we take time to reach the same level of concentration. For example, अभी आप वेबिनार अटेंड करते हुए मान लीजिए मेरे ऊपर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट सडनली आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप आ गया. सो जैसे ही आप व्हाट्सएप देखेंगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन 2 पे चली जाएगी. आप वापस आएंगे, आपको समय लगेगा वापस उसी लेवल के कॉन्सेंट्रेशन पे आने में. बट if you are a meditator, you will take much lesser time when you come back to the same job. So this was the difference that they found, that yogis, when they shift between two tasks, when they are doing one thing and they switch over to something else, when they come back to the first thing, they will take much less time to reach the same level of concentration. Whereas an ordinary person like you and me, when we switch between two tasks, मैं अभी अगर अपनी ईमेल देखने लग जाऊं, मैं वापस लेक्चर देने के लिए आऊं, तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा अपनी उसी लेवल की कंसंट्रेशन पे आने में. So this was again a significant finding that meditation helps you to achieve your level of concentration when you come back to the first task. Similarly, they also researched on mind efficiency. Mind efficiency में 3 चीजें बहुत important है. First is cognitive empathy. Cognitive empathy ये है कि I can understand your perspective. I can understand your viewpoint. When I am able to understand your viewpoint, it means I am cognitively empathic to you. So when I understand your viewpoint, I can talk to you better. The second thing is emotional empathy. Emotional empathy is when I can feel what you are feeling, not just your perspective, not just your viewpoint. I must feel, if you are happy, I must feel you are in a good mood, so I should respond accordingly. If I feel, if you are not so happy, if you are little sad today, and I can feel the same thing, then it is called emotional empathy. But there is a very third kind of empathy which is very important. It is called empathic concern. Empathic concern is when I'm also ready to help you, when I have compassionate feelings for you. So they found that the level of compassion in the yogis was much more than an ordinary person. There's another thing, very important thing which they found was gamma rays. गामा रेज जो होती हैं हमारे माइंड में, एक ऑर्डिनरी आदमी के माइंड में तब आती है, बहुत कम आती है, जब मान लीजिए हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और अचानक सोल्यूशन मिलता है. तो जैसे ही सोल्यूशन मिलता है, हमारे ब्रेन में जो वेव आती है उसको गामा रे कहते हैं. और जो गामा रे होती है उसकी जो ड्यूरेशन होती है, इट्स स्प्लिट सेकेंड, जस्ट मे बी हाफ अ सेकेंड, बट वो ब्रेन स्कैन में आ जाती है जब आपको टेस्ट किया जाता है. दे फाउंड वेरी सरप्राइजिंगली दैट अमंग द योगीज the gamma ray in their brain was always there. Even in an ordinary time, there was a gamma ray. Here, I must tell you, when I say yogis, etc., I must tell you, on the basis of level of meditation, we can divide meditators into 3 categories. First is the beginners. If you meditate and you have accumulated about 100 hours of meditation over few months or over 1 year, then you will be a beginner. Then second category is a long-term meditator. The long-term meditator is someone who has done or who has logged from 1,000 to 10,000 hours of meditation. They are the people who love meditation, who are doing regular jobs like you and I do. But
For us, meditation is a priority. We take out time either in the morning or in the evening, and we sit down and we spend 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, depending on our situation. So these people are called long-term meditators. And then there are Olympic level meditators who have logged 10,000 to 60, 70,000 hours in their lifetime. So who are these Olympic meditators? They are these yogis who have logged 10,000 to 60,000 hours of meditation in their lifetime. That's why their brain is so great that there are gamma rays all the time. And one more thing I would like to share with you, and then I think I can answer some questions, because you guys will be really having some questions in your mind. The third and the last thing which I want to share with you is the pain level. They tested yogis by giving them some pains. कि उनको जब पेन देते हैं हम, तो उनके ब्रेन में किस तरह की सिचुएशन होती है. So they gave them some pain. Before giving them the actual pain, they gave them a warning. And then they gave them the pain, and then they removed the pain. So when this pain process was given to an ordinary person, जैसे ही वार्निंग दी गई, उसके ब्रेन में पेन का जो लेवल है एकदम से 1 से 10 पर चला गया. जब एक्चुअल पेन दिया गया, तब भी वो पेन 10 के ऊपर बना रहा, और जब उस पेन को हटा लिया, तब भी वो 10 के ऊपर बना रहा. काफी समय लगा उसको नीचे आने. ये एक ऑर्डिनरी आदमी की बात है, आपके और मेरे जैसे, कि हमको जब वार्निंग मिलते ही हमारा पेन लेवल, इमोशनल पेन लेवल ऊपर चला जाता है, जबकि अभी पेन हमको दिया ही नहीं गया है. जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आता है, तो इंजेक्शन से पहले ही हमको पेन होना शुरू हो जाता है, हम डर जाते हैं. और जब एक्चुअल पेन दिया जाता है, तब भी हमारे ब्रेन में उसकी पेन की जो वेव है वो चलती है, और जब वो डॉक्टर इंजेक्शन निकाल लेता है, उसके बाद तक हमको पेन हो रही होती है. बट जब यही एक्सपेरिमेंट was done with the yogis, they found very surprising results. When they gave the warning of the pain, there was no change in the brain. Yogi's brain did not respond to any warning of the pain. They were not bothered. They were completely resilient. When the actual pain was given, the brain change for the pain was very low. And when the pain was removed, the brain change immediately came down. So these were very significant changes which they found when they compared the two brains, and they published their articles. And that's how the Western world scientifically tested our own practices of meditation and followed it. If you go to any great university and you talk to any professor, I'm sure he will share with you that I also meditate. So हम लोग क्यों नहीं करते हैं? मुझे उसका कारण शायद यही समझ में आता है कि वो एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध. जो हमारे घर का जोगी होता है उसको कहते हैं जोगड़ा, उसको योगी नहीं हम बुलाते. और जो दूसरे गांव से आता है कहते हैं बड़ा सिद्ध महापुरुष आए हैं, इनका स्वागत करो. अभी यूएस का कोई प्रोफेसर आ जाएगा तो हम उसका बहुत स्वागत करेंगे. And the same saying is there in English. The same saying is called, no prophet is respected in his village. No prophet is respected in his village. So my dear friends, this topic is very lengthy. I can talk for another hour, but today I think this much is enough, because I would like to engage with you on some questions also. So thank you very much. Thank you, Vikas. Sir, Gaurav is there. I will ask, yeah. I'm unmuting him. He will pose the question. Yeah. Jasleen Kaur says, how should we deal with the problem of procrastination? Gaurav? Yes, sir. So first deal that, then Gaurav will come. Yeah. Procrastination. I hope she's asking about procrastination. Yes, sir.
procrastination, the opposite word of procrastination is precrastination. There are people who precrastinate कि अभी वो deadline आई नहीं है, उससे 10 दिन पहले ही काम खत्म कर दिया. So I would not say that you should precrastinate, but you should also not procrastinate. And the best way to do is, and that's what I'm saying it from my experiential learning. Start making a checklist. If you want to make a checklist, divide it into two parts. First is the master checklist. In master checklist, jot down everything that you have to do, whether it relates to your profession, whether it relates to your family, whether it relates to your friends, whatever it is. Please create a master list. And then out of this master list, you can create a daily checklist. मान लीजिए मेरी मास्टर लिस्ट में हमेशा 60-70 काम जो है जॉट डाउन होते हैं. उसमें से आज मैं सारे के सारे डील नहीं कर सकता हूँ. मैं उसमें से 7 काम डील कर सकता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है. उसमें से मैं छांट लेता हूँ कि आज मुझे ये काम नहीं करना. सो चेकलिस्ट इज अ ग्रेट वे टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन. Thank you, sir. Gaurav is a lawyer practicing out in Chandigarh. He has a question. Yeah. Gaurav? Sir, good evening. I have been trying to concentrate on meditation, trying to stick on it. How to stay disciplined, and what are the signs from which you can make sure that you are going in the right direction? Very interesting and very important question. I'm happy you asked this question. You know, पहली बात तो ये है कि अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो कोशिश करिए किसी सेक्रेट प्लेस पे करिए. If you go to temple every day, if you can sit there and spend some time, it's great. Because सेक्रेट प्लेस पे मेडिटेशन करने का जो इफेक्ट है वो completely different होगा. But for any reason, if you cannot go to your shrine or temple or gurudwara or wherever, अपने घर में ही जहाँ पे आपने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, कोई मूर्ति रखी हुई है, वहां पे बैठ के कोशिश करिए कंसंट्रेट करने. और दूसरी बात, मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मेडिटेशन के बारे में वो ये कहना चाहूँगा, मेडिटेशन करने का कोई भी एक तरीका नहीं. कोई अगर आपको ये कहे कि यही तरीका जो है ये बेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन है, बिल्कुल नहीं. हम मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो इतना यूनिक है दैट वी मस्ट क्रिएट आवर ओन वे टू मेडिटेट. और आप किसी भी तरह से उसको करिए, और अगर आप उसको करते हैं तो कंसिस्टेंसी जरूर रखिए. चाहे आप 10 मिनट के लिए करिए, 10 मिनट भी अगर आप रोज करेंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो धीरे 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 आपको लगेगा कि मेरा जो फोकस है वो इम्प्रूव हो रहा है. एंड आई एम एंजॉयिंग द मेडिटेशन. सो 3 बातें मैंने आपको बताई. पहली बात कि अगर हो सके तो सेक्रेट प्लेस पे करिए. दूसरी बात कि मेडिटेशन का आपका अपना यूनिक प्रोसेस है. किसी को आंखें बंद करके फोकस करने में अच्छा लगता है, किसी को किसी आवाज को सुन के उसके ऊपर कंसंट्रेट करने में अच्छा लगता है. और तीसरी बात मैंने कही कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एक दिन करके 10 दिन नहीं करेंगे तो फिर हम उस प्रोसेस को ना तो एंजॉय कर पाएंगे, ना ही किसी लेवल पे पहुंच पाएंगे. चाहे आप 10 मिनट के लिए करिए, लेकिन रोज. Thank you. Thank you. Mr. Sandeep wants to ask a question. Sandeep, I've unmuted you. And Gaurav, you can mute yourself. Yeah, Mr. Luthra, thank you so much for your very good lecture. In fact, there are so many things that you have scientifically related, whether cortex and other things. But sir, my question is that I'm into a meditation from the last 6 months. I'm doing meditation, and I got it from the learnings of Maharishi Ramana, that who am I? I'm surrendering myself to because I consider that it's not my body, it is something above the conscious level. And the moment I am going into that thought, I will reach at the stage of thoughtfulness within a period of minutes. So I'm really thankful for you. You had
given the examples of the Harvard universities. My only request is that if my all fellow colleagues, they will try to understand who am I, and the moment they will try to understand it, that my level is, I'm not a body, I'm not my senses, I'm something above that. And the moment you will try to reach at that stage, the stage you had told that the yogic, they will have a more gamma rays, they will have a more influence of pain. I think it will be the byproduct of all these things. You have to raise above your raise above your level of consciousness. The moment I think that stage will reach, all these things, whether it is the development of brain, whether it is a raise of any quantitative methods, I think these all are already inculcated in our system. The only thing, and as you had very rightly explained, you have to know our system. I'm really very thankful that you have correlated the things with the scientific knowledge. I will love to, read all these papers if you can share. Basically, I'm a postgraduate in microbiology. I'm pursuing my LLM, and I'm really just want to listen from you. Just want to have a link from you so that I can also read all these papers, and it will be more scientifically. I had so many questions in mind, but the way you interpreted a thing, it actually tells about science and meditation. I just want to correlate that. I will be thankful to you if you can share the links of the papers that you had discussed for the Harvard University. I just want to go through it. And once again, sir, it was a very unique lecture. Everybody is talking about the practical aspects of law, but I think this is very important you discussed in your from your valuable time, and that really helps us a lot, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I will definitely share the links with you through Vikas. Thank you. Sure, sir. A large number of people are posing the question, which books according to you are good? 2-3 books according to whom can bring a sea change in somebody's life. Yeah. So the one question is from Ankush Bansal, sir. When I start meditation, I feel deviations in my mind. How can I meditate with concentration and without such deviations? It's a great question, because when we start meditation, definitely the thoughts come and the thoughts disturb us. So how do we deal with it? It's a very important question. My advice is, जब आप meditation करने बैठते हैं, आप focus करते हैं, किसी भी तरीके से focus करते हैं, तो कोई ना कोई thought आपको आएगा और आपको disturb करेगा. आपको उससे घबराना नहीं है. आपको जब ये awareness आएगी कि कोई thought आकर मुझको disturb कर रहा है, that is your first victory, because you have become aware that some thought is disturbing my focus. जैसे ही वो awareness आई, that's your first victory. और जैसे ही वो अवेयरनेस आती है, आप उसको थॉट को हटा दीजिए और वापस फोकस में चले जाइए. जैसे हम जिम में जाते हैं, हम अपना मसल बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं. मान लीजिए आपने डंबल को अपने हाथ में लिया और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका जो मसल है वो रिपीटेटिव एक्सरसाइज से बनना शुरू हो जाता है. इसी तरह मेडिटेशन में जब आप फोकस करते हैं, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है. फिर आपको लगता है मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, फिर आप उसको वापस ले आते हैं. फिर थोड़ी देर बाद फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है. फिर आपको अवेयरनेस आती है कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, आप उसको फिर वापस ले जाते हैं. ये बिल्कुल उसी तरह की एक्सरसाइज है जो कि हम जिम में मसल बनाने के लिए करते हैं. ये हमारे ब्रेन के मसल को बना रहा है. इसको साइंटिफिकली बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आप उसको वापस ले आते हैं. फिर कोई थॉट आपको डिस्टर्ब करता है, फिर आप उसको वापस ले आते हैं. तो बाय डूइंग दिस प्रोसेस यू आर एंगेजिंग इन द प्रोसेस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी से जो हमारी न्यूरो सर्किटरी होती है वो थिकन होती है, मोर कनेक्टेड होती है, और यहीं से हमारे जो ब्रेन में चेंजेस शुरू हो जाते हैं. एंड दोस चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. So when we thought of this session, we never realized that we will get the issues in a different manner where we can think about. We keep on reading the articles, but the way you are putting across, it's very nicely put up. I'm just asking the question from Mr. Prashad. He says, what type of mediation shall we do? How we know that the mediation is working? What type of meditation shall we do?
how we know that the meditation is working? देखिए, मेडिटेशन बहुत तरह की है. ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, कंपैशनेट एंड लविंग मेडिटेशन है. सो मैं जो करता हूँ, कंसंट्रेशन मेडिटेशन में आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट इट इज अ काइंड ऑफ बेसिक मेडिटेशन जिसमें आप बैठते हैं, आप अपनी आंखें बंद करें या ना करें. हमारी 5 सेंसेस हैं. फर्स्ट सेंस इज टच सेंसेस. जब हम सांस लेते हैं तो हमें जो सांस है हमारी टच सेंसेशन से चलती है. जब हम अपनी सांस पे फोकस करते हैं, हमको एहसास होता है कि हमारी जो सांस है वो हमारी स्किन को छू रही है. तो फर्स्ट इज टच सेंसेशन, सेकंड इज विजुअल सेंसेशन, थर्ड इज ऑडिटरी सेंसेशन, फोर्थ इज सेंसेशन ऑफ स्मेल एंड फिफ्थ इज सेंसेशन ऑफ टेस्ट. आप इन 5 में से किसी भी सेंसेशन का सहारा लेके फोकस कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि एक सेंसेशन का सहारा लें. यू कैन क्रिएट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 और 3 सेंसेशंस आल्सो. फॉर एग्जांपल, आपने आंखें बंद की, आंखें बंद करके आप किसी स्पॉट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ आप अपनी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट पे भी फोकस कर रहे हैं. इन दिस प्रोसेस यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ 2 सेंसेस. फर्स्ट इज योर touch sensation, breathing in and breathing out, and second is your visual sensation, because you are concentrating on some spot, some small spot of light by closing your eyes. So you have created a unique combination of 2 senses for yourself. So that's how you're concentrating. And what was the other part of the question? I'm sorry, Vikas. Just hold on, sir. How do we know that the meditation is working? What type of meditation shall we do? Very interesting question. Very interesting question. Okay. I'll... कबीर दास जी ने इसके बारे में एक दोहा लिखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेडिटेशन में क्या हो रहा है. इसको मैं दूसरे रूप में कहूँगा कि मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि मेडिटेशन का आनंद क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा. शायद 10%, जितना मैंने आपको बताया है वो 10% भी नहीं है, और वो सब साइंटिफिक जर्नल्स में लिखा जा चुका है, इसलिए बताना बड़ा आसान है. लेकिन जो मेडिटेशन का जो आनंद है, वो हमारे यहाँ एक दोहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कबीर दास जी का, जिसमें वो उसका भाव ये है कि जो अगर किसी गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और गुड़ खिलाने के बाद उससे पूछा जाए कि हाँ भैया आप बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो मुझे बताइए क्या गूंगा बता पाएगा कि गुड़ का स्वाद क्या है? गूंगा नहीं बता पाएगा. वो अनुभव तो कर पाएगा कि गुड़ में मजा क्या है, वो मीठा है या कड़वा है, लेकिन आप उससे पूछेंगे कि बताइए कि इसका स्वाद क्या है, तो गूंगा नहीं बता पाएगा. तो हम सब लोग जब मेडिटेशन करते हैं, उसका जो आनंद आता है, हम सब लोग गूंगे हो जाते हैं. उसका 10% तो हम बता सकते हैं हाथों से, इशारों से या मुंह से बोल के, बट 90% ऑफ इट is just your beautiful experience which you go through. और जहां तक रही बात कि मुझे पता कैसे चलेगा, अगेन आई वुड टेल यू इट इज योर सेल्फ एक्सपीरियंस. if you are doing it consistently, then every day you will realize कि आज का एक्सपीरियंस इस तरह का था, आज का एक्सपीरियंस इस तरह का था. तो वो एक आत्मज्ञान है, जो आपको अपने अंदर से आता है. इट इज अ सेल्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. आप धीरे धीरे उसको अनुभव करते हैं और धीरे धीरे आप ही को पता चलता जाता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ. हाँ, जो लोग और मेडिटेशन करते हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा आप अगर शेयर करें तो आपको ये इशारा मिल सकता है कि तो आप ठीक तरफ जा रहे हैं. तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपके कोई और साथी हैं जो मेडिटेशन करते हो, उनके साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए. शेयर वो भी करेंगे, शेयर आप भी करेंगे, तो आपको धीरे 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 पता लगने लग जाएगा कि मैं ठीक तरफ जा रहा हूँ. सर, पॉइंट वेल टेकन. कब शेयर करते करते शेयर बन जाएंगे मेडिटेशन में, ये दोस्तों के साथ ही एहसास हो पाएगा. So, Sumanpreet Olak wants to ask a question directly. Suman, you can come on the video also. Suman. Sir, Suman is not coming. आप उनका क्वेश्चन बता दीजिए मुझे. Just hold on. In this lockdown period, what other methods we can use for catharsis besides gardening, running, cooking, painting, etc.? Because all these have been done. Very interesting question.
सबसे पहला तो मैंने जो कुछ चीजें तो दोहराई हैं, मैं फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूंगा। एक तो डीक्लटरिंग करिए। डीक्लटरिंग दो तरह से होती है। डीक्लटरिंग आप अपने बेड साइड की जो साइड में टेबल पड़ी है उससे शुरू करिए। वहां पे कितनी सारी चीजें अनटाइडी पड़ी हुई है। आपके जो बेड साइड का जो ड्रॉर है वो उसमें कितनी सारी चीजें अनटाइडी पड़ी हैं। आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। तो उसको डीक्लटरिंग कहते हैं, जब हम अपनी चीजों को संभालना शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपनी चीजों को संभालना शुरू करते हैं, एक तो फिजिकली वो प्लेस जो है नीट एंड क्लीन लगने जाता है, उसके साथ साथ आपके माइंड को एक अजीब तरह की फीलिंग आती है। पहली फीलिंग तो ये आती है that everything is now orderly, everything is arranged in an orderly way. This is a great feeling. Second feeling is of accomplishment, कि आज मैंने अपना रूम जो है declutter कर दिया। तो decluttering is a great stress buster. अगर आप declutter करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। decluttering ये तो बताया मैंने फिजिकल वर्ल्ड में कि आप अपने रूम को टाइडी कर लीजिए। Another way to declutter your mind, another important area to declutter is to declutter your mind. आपके माइंड में कितनी सारी चीजें चल रही हैं जो बिखरी पड़ी हैं, उसको आप कैसे डीक्लटर करें। कभी कोई चीज आ जाती है सामने, कभी कोई चीज आ जाती है, कभी आपको लगता है आज ये इंपॉर्टेंट है, कभी लगता है अब ये अर्जेंट है। तो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, उसको आप डीक्लटर कैसे करें। और अगर आप डीक्लटर कर लेंगे तो योर माइंड विल बी एट रेस्ट। The best way to declutter your mind is to create your checklist. Again, I would say create two types of checklist. One is the master checklist and another is daily checklist. Master checklist में सारे काम डाल दीजिए किसी भी तरह के हों, और daily checklist में रोजाना उस master list से 6, 7, 8 ऐसे काम उठाइए जो कि आपको करने हैं। उसमें से 3 काम ऐसे होने चाहिए जो आप हर हालत में पूरे करें। When you declutter your physical world, and when you declutter your mental world, you will be at peace. Thank you, sir. We on this platform have Mr. Shakti. Yeah. Mr. Shakti wants to know how he can ensure better Shakti. Mr. Shakti. Vitality. Sir, namaskar. Sir, I am Shakti. Namaskar. Sir, my precise question is that what kind of any specific meditation for any specific purpose? One. The next is what kind of swar, like dheer, which kind of swar we should use in that, and what kind of swas, like Sudhanshu, Panshu, which kind of, and in the meditation, did we need all 3 things, manasa, vacha, karmana, to just? शक्ति जी थोड़ा माइक के पास आ जाएं। हाँ जी, अब बेटर है? हाँ बिल्कुल जी, शक्ति आ गई है। आ गई है। कहाँ तक सुना मुझे ये नहीं पता, मैं रिपीट करूँ या सर सुन लिया? रिपीट कर दो, बेटर रहेगा। हाँ सर, मेरा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ये थी कि हमें किसी स्पेसिफिक चीज को गेन करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मंत्रास हैं? 1. सेकंड इज, जब हम कोई भी जाप करते हैं या कोई करते हैं तो उसमें स्वर कौन सा होना चाहिए? धीर, रस्व, किस टाइप का स्वर होना चाहिए? और जो हमारे श्वास हैं वो कैसे होने चाहिए? विधांशु, पांशु, स्थांशु, वो किस टाइप का होना चाहिए? और क्या इसमें मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मैंडेटरी है? और स्पेसिफिकली कैसा ऑरा कैसे क्रिएट करें कि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़े? मुझे लगता है आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ मालूम है। मैं तो आपका मतलब मुझे आपसे सीखना चाहिए। सर ये एस्ट्रोलॉजर भी बड़े तगड़े हैं। इन्हीं जैसे लोगों पे बना हुआ है कि हमें मुझे को इतनी शक्ति देना दाता। Mr. Shakti, there are so many ways to meditate. So it is up to you what kind of meditation you want to choose. What is your aim in life? For example, visualization भी एक तरह की meditation है। Visualization एक तरह की meditation है। Concentration करना, transcendental meditation अपने आप में एक तरह की meditation है। Loving and compassionate meditation भी अपने तरह की meditation है।
तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह की मेडिटेशन की जो पद्धति है उसको चूज करना चाहते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू मेडिटेट. सो ये आपको देखना है कि आपका एम क्या है, आप उस मेडिटेशन की पद्धति से हासिल क्या करना चाहते हैं. सो देन आई विल लीव इट टू यू. आपने जो बात कही कि हमको मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से. जब आप मेडिटेशन में होते हैं, मन से होते हैं, वचन उसमें बिल्कुल शांत हो जाता है, कर्म आप कर्मशील होते हैं क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं. तो मेडिटेशन में तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सारी शक्तियां हैं, चाहे वो मन से जुड़ी हैं, चाहे वो वचन से जुड़ी हैं, चाहे वो कर्म से जुड़ी हैं, मनसा वाचा कर्मणा, सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, सारी शक्तियां हैं, उसमें शामिल हैं. तो इसलिए मेडिटेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने हर अंग के प्रति पूरी तरह से अवेयर है. उससे ज्यादा बड़ी स्थिति कोई नहीं है अवेयरनेस की. तो मनसा वाचा कर्मणा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमको पूरी तरह से तीनों प्रकार से मेडिटेशन में उसका प्रयोग करना पड़ता है. आई होप आई एम क्लियर. यस सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू. मेरा बेसिक जो आज का आपका ये था कि किस चीज के लिए करनी चाहिए. सो व्हाट आई फील इट इज एन ओपन सीक्रेट कि किस चीज के लिए करनी चाहिए. जितने भी मेरे एडवोकेट ब्रदर्स हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड हैं, आई थिंक first core motive is to get money and to get more, what I feel in today's world. So what kind of mantra you suggest to everybody so that they should flourish and practice, they can get more and more and more in life? देखिए ऐसा है, मेडिटेशन हमें किस लिए करनी चाहिए. जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो यहीं से मैंने शुरू किया था कि if we meditate, we can become emotionally more resilient. And Yes. if we become emotionally more resilient, we can deal with our stress, we can deal with our burnout, we can deal with our depression, we can deal with our anxiety. So meditation करने के इतने ज़्यादा फायदे हैं, इसलिए हमको meditation करना चाहिए. और एक क्वेश्चन आपने कुछ और पूछा, पार्ट ऑफ क्वेश्चन आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग. कैन यू अगेन रिपीट? यस मिस्टर शक्ति. यस सर, ये स्पेसिफिक मंत्रा जो आज की जरूरत है. ये हो सकता है आप मेरी बात से थोड़ा एग्री ना करें, बट मेरा मानना यह है कि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शब्द खो जाते हैं. हम मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम हाथ जोड़कर अपने मुंह से कुछ शब्द कहते हैं, मंत्र कहते हैं या श्लोक कहते हैं, और उससे हमारी प्रार्थना होती है. मेडिटेशन इसका बिल्कुल विपरीत प्रोसेस है. जब आप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो आपके शब्द खो जाते हैं. आप जो भी आपके भगवान हैं या जो भी आपके जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जिसको भी आप भगवान मानते हैं, हाँ ईश मानते हैं, आप उसमें लीन हो जाते हैं तन मन और धन से, तो आपके शब्द खो जाते हैं. तो मंत्र एक सहारा हो सकता है शुरू में मेडिटेशन में जाने का, और आप मंत्र कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे. आप किसी भी धर्म में आप उस मंत्र को ले लीजिए, क्योंकि आपको अगर अपने ईश से जुड़ना है तो आपको जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए और आप उससे जुड़ने की कोशिश करिए. लेकिन जब आप धीरे धीरे ऊपर की अवस्था में चले जाते हैं तो सारे शब्द खो जाते हैं, सारे मंत्र खो जाते हैं, क्योंकि आपको शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती. सर इसका मतलब आप अनहदनाद के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं. Thank you, Shakti ji. Sir, Gagan is again a lawyer. Yeah. Gagan Kohli. Gagan Kohli. Sir. ये बीएस मक्कड़ साहब ने वो जो कबीर का दोहा था जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने लिखा है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुंह स्वाद. वही बात. बीएस मक्कड़ साहब, थैंक यू वेरी मच. सर हम मक्कड़ साहब को अनम्यूट कर देते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि गूंगे और उसमें क्या फर्क रहता है.
Thank you very much, sir. Thank you very much, because we have learned a lot of things from you, sir. Now it's an amazing topic which you have. You can say the basic topic you have given is such a immense knowledge about it, and I am very much keen. At least I was very much keen to just like have such kind of the knowledge, sir. Sir, one thing I just want to ask from you, because since you reached on a level, sir, where we people are thinking about to reach. So I just want to know from your side, sir, what kind of the book you would suggest, that the book which is your base. I think every successful persons definitely have such kind of the bookish knowledge or books which you can say impress or change his life. So I just wanted to know, sir, though my topic is totally different, sir, but I just wanted to ask, like, what kind of the book you would suggest every person has to read it in his life, sir? I would suggest, though I personally read research articles when I want to gain some knowledge on meditation. I read some research articles. They are published in the scientific journals. However, if you want to read a book, I would recommend the book is called Science of Meditation. The Science of Meditation. It is written by Daniel Goleman. So you can buy this through Amazon, etc. And it is available. So it is a great book. So you can read it. Because I have just like heard your entire session, sir. Because I was just like correlating the power of the subconscious minds. Because few contents is as it is narrated in the power of the subconscious minds. One of the book which has you can say impressed me, which was the monk who sold his Ferrari. That is also totally based on the the persons who came in India. The Julian Mantle, the lawyer of the UK, he came in India and you say took such kind of the therapy as well as the meditations, na? So I was correlating ki sir is saying that thing is already you can narrated, and sir is also correlating the same things. So I'm very impressed about it, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Makar Saab. Thank you, Vikas. Gaurav Pathak. Hi, Mr. Luthra. It has been a wonderful session, and when I read the subject, I didn't expect that it would turn out to be such an intellectual. I wanted to ask, since we've been talking about so much of personal change, what change did you see in your profession when you started to meditate? This is a personal question, but still, for your benefit, I would answer it. I am doing meditation for the last 5-6 years, and I do it regularly. And I try to do at a sacred place. I have a routine. I go to Gurdwara every day. So I try to sit there for 30-40 minutes and do my meditation. Now, what are the changes that have happened in me or in my personality? I should not say what it is, because it is for others to judge me whether I have changed or not. But I can very humbly, I can tell you one thing, that I have become a bit calmer. थोड़ा शांत हो गया हूँ मैं. तो एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये मेरी पर्सनालिटी में आया है कि मैं थोड़ा पहले से ज़्यादा शांत हो गया हूँ. तो बाकी तो अब जो लोग मेरे से डील करते हैं, जो मेरे आसपास हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, I leave it to them. They should tell me what has changed in me. I should not be bragging about myself कि मैंने 5 साल में ये कर लिया, ऐसा हो गया. I would not do it very humbly. I hope you understand. So the next question is by Gagan Kohli. Hello. Good evening, Vikas. Today I think that all session questions are being coming from Gagan G only. Gaurav Pathak, Gagan. So you are all surrounded by G only. Can you hear me, Vikas? No, everybody is able to hear you. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Thanks, Vikas. Good evening, Luthra sir. How are you? I'm good. How are you? Very fine, sir. Thank you. Sir, आप कितना टाइम करते हैं रोज मेडिटेशन? मैं जनरली 30, 40, 50 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन.
Right. So when I was in school, the जी team came from Germany. जी तो वो meditation का उन्होंने एक process बताया कि to हम्म, sit straight on your हम्म, chair for 20 minutes. तो उसे जो spinal cord में एक raise है, there is a feeling which goes, क्योंकि it is a thoughtless process. हम्म, तो ये जो बाहर pilots हैं, they are given this training for meditation because they have to concentrate on their tools. yeah. So what do you have on this? It is a thoughtless process. Your some ways or your feelings are going through spinal cord. You have to sit in a certain direction, like straight. What do you say, sir? देखिए ऐसा है कि जो मेडिटेशन में जो बैठने की पोजीशन है वो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल तन के और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं, क्योंकि वो हो सकता है एज अ बिगिनर आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, आप उसमें ना बैठ पाए। तो इसलिए इन द बिगिनिंग आप उस पोजीशन में बैठिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल, व्हेन आई से कंफर्टेबल का मतलब ये है कि मेडिटेट करते करते आपको दिक्कत भी ना हो, और मेडिटेट करते करते आपको इतना आलस भी ना आए कि आप सो जाएं और आपकी गर्दन झुकने लग जाए। तो यू शुड बी अलर्ट, यू शुड बी अवेयर, बट यू शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल। अगर आप बहुत ज्यादा तन के बैठ जाएंगे तो आपका जो ध्यान है वो आपकी डिस्कम्फर्ट के ऊपर ज्यादा जाएगा और आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे तो जैसे ही आप फोकस करेंगे लगेगा आपको नींद आ रही है। तो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो आइडियल स्थिति है कि आप कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन ना तो आपको आपकी पीठ में कुछ दर्द होना चाहिए आपको, ना आपके बैठने से आपको दर्द होना चाहिए, और ना ही इतनी कंफर्टेबल हो जानी चाहिए कि आपको आलस आने लगे। Thank you, sir. The point Basically, is well sir, it taken. is a thoughtless process. Yeah. Thought should not come. So this is a meditation. या मेडिटेशन का जो टारगेट है वो थॉटलेसनेस है, कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं, एक ऐसी अवस्था में आ जाएं जहाँ पे कोई थॉट आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वही कंसंट्रेशन की जो आइडियल सिचुएशन, तो उस पर हमको पहुंचना है। अब लेकिन पहुंचने का जो तरीका है वो सबका यूनिक है। मेडिटेशन इज अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। There is no right way of meditation, there is no wrong way of meditation. All of us have to learn from each other, maybe from our master or our mentor or our guide, and then create our own very unique style of meditation. So इसलिए it is a highly individualized process. आपको धीरे 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 उसको क्रिएट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपकी वो जो स्थिति है थॉटलेसनेस की, जहाँ कोई थॉट, कोई विचार आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो आनी शुरू हो जाएगी। शुरू में वो थोड़े समय के लिए आएगी, धीरे 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 वो ज्यादा समय के लिए आनी शुरू हो जाएगी। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Gagan. And sir, one last question, because we don't go beyond the schedule, though questions will keep on pouring. And once we have a speaker like you, and sir, I would share on behalf of the entire participants who have come on the platform. We just diverted from the main topic. We were all getting through the legal issues, etc. Because I knew you personally, I knew that you could always motivate all the people. Therefore, I talked to the team of Beyond Law and thought that should we take a call, and that too on a Sunday when there are too many participants, too many webinars going across. But it has been well received by everyone. I'm just putting in one last question from Nitika, and then as usual we will ask you some poem or some couplet from your side written by yourself. Nitika, over to you. Then we will ask Mr. Luthra to give his inputs in his own style. Hindi mein wo baat hi kuch aur hai sir ko sunne ki. At least I had the pleasure of that. Nitika, you can ask the question. Yes, sir. Thank you so much for the opportunity, sir. Good evening, Mr. Luthra, and thank you so much for such an enlightening session that we had today from you. Sir, my question is that
everyone says, and even I have done some spiritual courses as well, and I try to practice spirituality on everyday basis. So they say that do not let external disturb your internal. So sir, while we are practicing meditation, we reach, I cannot say that there are levels of it, but we reach some level of spirituality and enlightenment within us. But sir, as lawyers, we have external circumstances and families and everything else going on in the world have an effect on us, because we are humans as well. So sir, how can we maintain a balance between the external as well as the internal? Balance is a very important thing to achieve in all spheres of life. Yes, Leave alone the external world and the internal world. एरिस्टोटल की जो सारी फिलॉसफी है वो बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने हर स्फीयर में बैलेंस को एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने कहा है कि एक स्पेक्ट्रम में एक तरफ कॉशन है और एक तरफ करेज है. सो अगर आप लाइफ में हर सिचुएशन में कॉशियस रहे, हमेशा ही कॉशियस रहे, तो कभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे. और दूसरी तरफ अगर आप लाइफ में हर सिचुएशन में करेजियस रहे तो बहुत सारे डिसीजंस आपके खराब हो जाएंगे. पीपल विल कॉल यू फूल हार्टेड, कि हर जगह ही अपना अड़ जाता है, हर जगह ही करेज दिखाने लग जाता है. सो एरिस्टोटल सेज दैट द बेस्ट अमाउंट ऑफ करेज लाइज इन बिटवीन, वेयर यू आर cautious also and you are courageous also, but it depends on the situation. किसी सिचुएशन में आपको 40% caution चाहिए, 60% courage चाहिए. किसी सिचुएशन में आपको 70% caution चाहिए, 30% courage चाहिए. So this will depend or this will vary from situation to situation. अब आपने कही कि इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में बैलेंस कैसे लाएं, तो जी सर, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करके थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के तरफ धीरे धीरे जाने लगता है, तो उसके लिए तो बल्कि बैलेंस लाना बहुत आसान हो जाता है. वो मेडिटेशन का जो सबसे पहला काम है वो है सेल्फ अवेयरनेस. मेडिटेशन आपको अपने बारे में अवेयर करती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा थॉट मुझे आकर डिस्टर्ब कर रहा है. आप देखिए ना, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, या जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था, I was not aware which thought was disturbing me. I would get disturbed the whole day, but I would not realize why I am disturbed. I would not realize that this particular thought is troubling me. But when you meditate, आप फोकस करते हैं, आपको कोई थॉट आके डिस्टर्ब करता है, आप इमीडिएटली इस बात से अवेयर हो जाते हैं कि ये कौन सा थॉट था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. So your self awareness is your great victory. और वो थॉट कहाँ से आता है? एक्सटर्नल वर्ड से आता है. एक्सटर्नल वर्ड से आपके इंटरनल वर्ड में आता है. आप इंटरनल वर्ड में बैठे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अवेयर हो जाते हैं कि ये एक्सटर्नल वर्ड का थॉट जो है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. जैसे ही आपकी ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी शुरू होती है, आपको बैलेंस करना आ जाता है. आपको समझ में आ जाता है कि ओह, ये थॉट इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है जो मेरे प्रेशियस मेडिटेशन के टाइम में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. ये थॉट इतना प्रेशियस नहीं है या इतना पावरफुल नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ, इसको बाद में डील कर लूंगा. तो यहीं से बैलेंस लाने की जर्नी शुरू हो जाती है. आप इस तरह से इसको कभी सोचिएगा, धीरे धीरे आपको बैलेंस आना शुरू हो जाएगा. Thank you so much, sir. Sir, I think I need to practice more to achieve that balance, and I'll definitely try. And sir, thank you so much for such an enlightening session. I guess this was much needed in this time of Corona, and especially when we all are sitting at home and trying our best to do something progressive or meaningful in our lives. Thank you so much, sir. Thank you for an important question. Thank you so much. Thank you, sir. जब इधर सब वकीलों को देख रहे हैं कि भाई वो साथ साथ पता चल रहा है मेडिटेशन में भी एक्सपर्ट हैं, तो अनदर ही एडवोकेट्स का फैसेट पूरा चल रहा है. अच्छा. ये कुछ राज हैं जो पुलिस वालों ने खुलवा दिए आज प्लेटफॉर्म पे. हैट्स ऑफ टू यू. आज पता चला कि आप जब चंडीगढ़ में डीजीपी थे, कई सॉलिड केसेस कैसे क्रैक डाउन कर देते थे. सभी न्यूज़पेपर्स फुली फ्लडेड रहते थे दैट
Mr. Luthra got this case cracked down. I never knew that the lawyers in the meditation are so good. So, कुछ couplets आपकी तरफ से, then we'll just have a formal vote of thanks. एक आपको कविता सुना देता हूँ जो मैंने जब मुंबई पर टेररिस्ट ने हमला किया था, तो आई थिंक इट वाज 2008 26/11। तो उस समय मैंने कविता लिखी थी एक पुलिसमैन के पर्सपेक्टिव से। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिसमैन उसमें मारे गए थे टेररिस्ट के हाथों, और मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है मैं आभारी हूँ आपका। तो एक शहीद है, वो कह रहा है मैं आभारी हूँ आपका। तो एक छोटी सी कविता है, 1-1.5 मिनट लगेगा। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया। आज की तारीख में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के योद्धा हैं, उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है, क्योंकि वो भी शहीद हो रहे हैं और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अपनी जान दे रहे हैं। चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी भी किस्म के लोग हैं, या बहुत सारे एडवोकेट और जजेस भी आज बहुत इंपॉर्टेंट कामों में फ्रंट लाइन पर आकर अपना काम कर रहे हैं। तो उन सबको ये कविता समर्पित है। उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं हैं और बहुत सारे लोग शायद आने वाले समय में शहीद होंगे। तो उन सबकी तरफ से ये कविता है, मैं आभारी हूँ आपका। तो शहीद कह रहा है, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर। सॉरी। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी, और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, नरसती ज़बान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो। और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती ज़बान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम हैं। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम हैं। जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन? जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर? कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है? कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है? किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए? किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए? कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है? कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है? किसने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों? किसने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों है? ये किरदार बदलते क्यों नहीं? जीते जी मैं इन्हें भाता क्यों नहीं? मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों? ये किरदार बदलते क्यों नहीं? जीते जी मैं इन्हें भाता क्यों नहीं? मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों नहीं?
आपकी मोमबत्ती आपका उबाल, आपकी मोमबत्ती आपका उबाल, और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम, और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं शत शत आभारी हूँ आपका, मैं शत शत आभारी हूँ आपका, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब। सवाल और भी हैं लेकिन, सवाल और भी हैं लेकिन, मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। धन्यवाद। An excellent piece. I just wished that it was an open platform and not a virtual platform. The amount of clapping, the amount of applause, what you could have got, at least on a virtual platform, we have all enjoyed, but that expressions, because we do not see everybody on the same platform. But I am able to see on the persons who are on the videos, their expressions tell it all. I can vouch upon them that they have actually enjoyed. Thank Number you two. so much. Sir, you had shared a share with me on when people were giving photographs and not that. That was very well received in all the mediation centers and people posted on the Facebook. Just that piece of that. वो शेर मुझे लगता In नहीं fact, है I was वैसे वो trying. A शेर friend of mine had posted on the वो शेर WhatsApp. मेरा नहीं है, मुझे कहना चाहिए, I mean I should be honest with you, ये किसी दोस्त ने मुझे भेजा था, But it was very well received. या मैं ट्राई करता हूँ अगर वो मुझे मिल So जाए। I will also try on the Facebook because many of my friends, in fact, Gaurav had also shared it. Gaurav Pathak probably might be knowing it. I will just check it on the Facebook because a friend of mine had posted it. Because when you had shared it, I had posted in the groups. I didn't receive. अच्छा ऋषि सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब सर नहीं तो अपना ही कोई बोलते हैं, तब तक मैं बता देता हूँ आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। सर दैट वाज खुददार मेरे शहर में फाके के मरना जाए। खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया है, राशन तो मिल रहा था और वो फोटो से डर गया है। हाँ खुददार मेरे शहर में फोटो से डर गया। Sir, I will send you that share because the way you will express it, I am sharing it with you on the mobile. Okay. Yeah. Because the role which is essayed by any actor like Irfan Pathan, Amitabh Bachchan can only be done by him. So we would all love that. It comes from him. But ये शेर मेरा नहीं है, ये किसी दोस्त का शेर है। It doesn't matter. Sir, it doesn't matter. खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया। खुददार कहते हैं जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। खुददार मेरे शहर का, फाका कहते हैं भूख से। खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन तो बहुत था मगर फोटो से डर गया। राशन तो बहुत था मगर फोटो से डर गया। खाना दे रहे थे लोग सेल्फी के साथ साथ, खाना दे रहे थे लोग सेल्फी के साथ साथ, मरना था उसे भूख से गैरत से मर गया। मरना था उसे भूख से गैरत से मर गया। In fact, when I posted in various groups, that was one of the thing which was actually liked by everyone. So before I asked Deepak Jindal, the way we started the session initially, there was a lot of fumbling. Since a lot of my friends, the participants would agree that I am quite avid follower of, I'm a movie buff and as well as watch a lot of cricket. I am reminded of the World Cup 1983 when Zimbabwe was 17 for 5. Then Kapil Dev takes over, hits 175, makes it sail through. It is the same way initially, a lot of fumbling from our side, your side, our side. But eventually we had a great session. Over to Deepak for a formal vote of session and a vote of thanks. During some time, we will again request that people would, the way they have received it. And I will share it privately because there were 2 very good webinars. Despite those webinars, we have been able to attract the lawyers. That thing, it shows that you have the magnetic charisma to attract people towards your platform. Over to you, Deepak. Thank you, Vikasji. It was a sheer privilege to hear to Mr. T.S. Luthra for a very
excellent and enlightening session on life skills for lawyers. Sir, we are very thankful to you for this excellent session where you focused on various life skills. Primarily, you mentioned that we should be emotionally resilient, and you focused on other life skills also, such as optimism, empathy, physical activities, everyday's to-do list, mindfulness and meditation basically, and other aspects like multitasking, cognitive empathy. There are various other aspects. Sir, we are extremely benefited by this session, sir. It was a superb session, and we assure you that we will definitely take care of these skills, sir, in our lives and in our profession. And we, again, at the cost of repetition, that we have benefited a lot, sir. Thank you very much, sir. Thank you. I must also thank my very dear friend Vikas and Dr. Deepak Jindal. I'm really thankful to you for giving me this great platform and to connect with so many lawyer friends. So I also enjoyed the whole session, and especially the question answer session. So I'm also very grateful to. तो जाने से पहले अंश को भी बोलते हैं एक बार स्क्रीन पे आ जाए, क्योंकि अंश भी आपके इस पूरे सिनेरियो का बैकग्राउंड है और दिल्ली के एक लीडिंग लॉयर हैं, लीडिंग लॉयर के साथ वहां कर रहे हैं. We keep on reading his articles on Bar and Bench, Live Law, and otherwise in Economic Times. That's why they say like father, like son. If Ansh is in and around, you just. No, he's not there, so I'm sorry. He's not there. He's the actual director who doesn't want to come in the forefront. Definitely. Sir, tomorrow, for the convenience of my friends, tomorrow we have two sessions. In the morning, we will be having session on insolvency. The keynote speaker will be Madhvi Dipan, who is an additional Solicitor General of India. She will be giving us a journey of insolvency and bankruptcy code. Do stay connected, because we have realized with the advent of time that 11 a.m. was difficult. So we have shifted the time to 11:30 a.m. Stay connected on WhatsApp, Facebook, and Instagram. Thank you, everyone. Thank you, Luthra Saab. Thank you.